Hello students, let us start with the next lecture, that is types of chemical reaction. Now you have studied what is a chemical reaction. So chemical reaction is not when atoms of one element change into atom of another element. Also, chemical reaction does not include atoms of one element disappearing और सडनली अपियरिंग इन मिक्सचर. तो ना तो एटम्स चेंज हो रहे हैं, ना तो एटम्स गायब हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ना तो एटम्स क्रिएट हो रहे हैं. तो फिर केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है? केमिकल रिएक्शन में देयर इज ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस. समझ में आया आपको क्या हो रहा है? ब्रेकिंग एंड making of bonds. What are bonds? Bonds are chemical bonds, like they can be ionic or covalent or even other type of bonds which hold different atoms together. We will study about them in chapters 3 and 4. So to understand what exactly is chemical reaction, let us take few examples. ठीक है? I am giving you few alphabets. AEN RSTG. अब आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई टू फ्रेम डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम दिस. हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू फ्रेम? पॉज करने के बाद ट्राई करना एंड आफ्टर यू हैव फिनिश्ड मेकिंग 10-15 वर्ड्स रिज्यूम द वीडियो. तो देखो कितने सारे वर्ड्स बनते हैं. strange, range, age, tea, rat, get, sage, net, wren, stag. So many are there. Rage, right? I can make many other words from this. तो अब यहाँ पे letters तो same है, लेकिन letters का arrangement या तो letters का choice change करने से मैं अलग अलग letters, words बना सकती हूँ. So same thing happens with chemical reaction also. Different atoms combine in different proportion to give you different kind of products. And those atoms which combine or which react are known as reactants. Let us take one more interesting example. I will give you corn, मकई के दाने, मैदा, oil, cheese, some herbs, spices एंड कुकिंग गैस. आप ये सारे इंग्रेडिएंट से क्या क्या बना सकते हो? माई फ्रेंड्स, माई स्टूडेंट्स ऑलवेज टेल मी द मैडम खाने के एग्जाम्पल मत दिया करो, भूख लग जाती है क्लास में. सो इफ़ आई गिव यू दिस इंग्रेडिएंट्स यू कैन मेक अ पिज़्ज़ा. ओ माई गॉड, माई माउथ इज़ ऑलरेडी वाटरिंग. अ हॉट चीज़ी कॉर्न एंड चीज़ पिज़्ज़ा. वुड यू लाइक टू हैव इट? आई वुड डेफिनेटली लव टू. मैं इसमें से सूप भी बना सकती हूँ, स्वीट कॉर्न सूप. देन आई कैन ऑल्सो मेक वेजिटेबल ऑफ कॉर्न कॉर्न को बटर में सॉट करके थोड़े से स्पाइसेस डाल के उसका वेजिटेबल और मैदा का मैं नान बना सकती हूँ. सो सेम इंग्रेडिएंट्स मिक्सड इन डिफरेंट वेज, दे आर हैंडल्ड डिफरेंटली एंड दे कैन मेक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. अब एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा केमिस्ट्री का. So suppose I give you two atoms, hydrogen and oxygen. क्या क्या बना सकते हो इसमें से? I can make oxygen gas, hydrogen gas, water and hydrogen peroxide. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब सेम तरह के एटम से बने हुए. वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड अलग अलग एटम्स से बने हुए हैं. दैट इज़ you have taken the proportion of hydrogen to oxygen is different. Water everybody knows about. Hydrogen peroxide you can get this in medicine shops. It's a cleansing agent. It's a very reactive one also. It is used in beauty parlors for pedicure and otherwise also it's a cleansing agent. Okay, that is hydrogen peroxide. So chemical reaction is essentially taking different kinds of atoms, either making of bonds between them or breaking of bonds between them. Now let us study
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उसमें से सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन। आई कॉल दिस रिएक्शन A plus B, AB types of reactions. Let us understand with the help of an example. अब हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे। बीकर में आई विल ऐड कैल्शियम ऑक्साइड, चूना जिसको बोलते हैं ना, वो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं घर पे। पान की दुकान पे जाना, 2 या 5 रुपए का चूने का एक ट्यूब मिलेगा वाइट कलर का, लोग अक्सर उसको तम्बाकू में मिला के खाते हैं, वो लेकर आना। ओके, सो कैल्शियम ऑक्साइड, या तो इसको बोलते हैं क्विक लाइम, हिंदी में कहते हैं चूना। यू हैव टू टेक दैट एंड यू हैव टू ऐड सम वाटर। अब जैसे ही इसमें पानी डालोगे और थोड़ी देर बाद अगर आप बीकर को टच करोगे, यू विल सी दैट बीकर हैज़ बिकम हॉट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक विगरस रिएक्शन हुआ। किसका रिएक्शन हुआ? वाटर एंड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का विगरस रिएक्शन। विगरस मतलब एकदम फटाक से हो गया, जल्दी से वो पानी गर्म हो गया, एंड दैट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ऑब्जर्व इट, कैसे लिखा हमने? कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2, +2 -2 कैंसल। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया CaO। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्विक लाइम, दैट इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड in solid state is reacting with water in liquid state to give you slaked lime, and it releases a lot of heat. Slaked lime क्या है? Chemically it is calcium hydroxide. Do you remember the crisscross method? Calcium Ca hydroxide, calcium का valency is 2, hydroxide OH का valency is 1. तो जब हम क्रिस क्रॉस वैलेंसी लिखेंगे, कैल्शियम 1, सो देयर इज नो नीड टू राइट एनीथिंग। हाइड्रोक्साइड में हम 2 लिखेंगे, बट वी हैव टू मेक ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट नहीं बनाया तो क्या हो जाएगा? इट विल इम्प्लाई दैट 2 इज़ ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड नॉट फॉर ऑक्सीजन, बट ऐसा नहीं है। कैल्शियम इज़ नॉट रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स सेपरेटली, इट इज़ रिएक्टिंग विथ हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ रेडिकल which has valency -1, और इसीलिए हमको ब्रैकेट डालना ज़रूरी है। So the name of the compound will be calcium hydroxide. Now this kind of reaction where 2 or more reactants are producing a single product, कौन से 2 reactants हैं यहाँ पे? Calcium oxide and water, giving you a single product, that is calcium hydroxide. प्लस इट इज़ ऑल्सो रिलीजिंग सम हीट। केमिस्ट्री में जब भी हमको हीट लिखना है, वी कैन यूज़ द सिंबल ऑफ ट्राइंगल। तो ये जो रिएक्शन है, दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डे टू डे लाइफ में भी हम ये रिएक्शन करते हैं। आपने देखा होगा आपके स्कूल की दीवारों पे या घर के बाहर हम लोग चूना करवाते हैं, कलर करवाते हैं ना, चूना मरवाते हैं, ऐसा बोलते हैं। सो व्हाट इज़ दैट चूना? चूना इज़ नथिंग बट कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर। एक बड़ी सी बाल्टी लेते हैं, उसमें वो चूना डालते हैं और पानी डालते हैं, एंड यू विल सी दैट सो मच हीट इज़ जनरेटेड दैट द वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग ऑन इट्स ओन विदाउट सप्लाइंग हीट। बिना गर्म किए पानी बॉयल होने लगता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी हीट जनरेट हो रही है। अब ये चूने का लेयर जब आप दीवार में मारेंगे, इनिशियली इट विल बी ट्रांसपेरेंट, बट धीरे 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 वो चूना क्या करता है? वो एयर के साथ रिएक्ट करता है। एयर के कौन से कंपाउंड के साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्रांसपेरेंट था, बट नाउ इट विल मेक अ वाइट ओपेक सब्सटेंस, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। लेट अस सी द फॉर्मूला। कैल्शियम +2, कार्बोनेट -2, CO3 -2 is carbonate, +2 -2 cancel। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया? CaCO3। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
plus carbon dioxide gives you calcium carbonate plus water. Okay, this is not a combination reaction because यहाँ पे two reactants are giving two products, जबकि combination क्या है? Combination is two or more reactant giving you a single product. So although we have discussed this reaction, this is not a combination reaction. Let us take some more combination reactions. कोयले को जलाया तो क्या हुआ? When you burn coal, what will happen? It will become red hot and it will give you heat energy. So carbon plus oxygen giving carbon dioxide gas is also combination. Hydrogen plus oxygen giving water is also combination. So all these are examples of combination reaction. Now further, reaction can be of two types. Which two types? Exothermic, endothermic. Exo, heat is evolved, released. Endo, heat is used. Let us take examples of exothermic reaction. एक तो हमने अभी देखा था, calcium oxide plus water, the beaker became hot, so that is first example of exothermic reaction. दूसरा हमने क्या देखा? Burning of coal, यहाँ पे भी heat release होती है, that is also exothermic. तीसरा example is burning of natural gas. Natural gas क्या होता है? When you mine for petroleum products, there is a gas which is released and that is known as natural gas, जिसका main ingredient is methane. Methane is CH4. So when you burn this natural gas, burning का मतलब यहाँ पे है combination और combustion. Burning is essentially it combines with oxygen. So burning of natural gas or combustion of natural gas will actually give you carbon dioxide, water and energy. We can use this energy either for lighting the street lamps or cooking or driving a car, etc. etc. So this is also an exothermic reaction. एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो हमारी बॉडी में होता है. Now actually whatever food you eat, let us say if the food that you have eaten is carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या हैं? राइस, पटेटो, ब्रेड, ये सारे कार्बोहाइड्रेट हैं. दीज आर फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट. अब इसका डाइजेशन होगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. इफ़ यू सी द पिक्चर ओवर हियर, carbohydrate is a complex substance. Look in the figure, I have tried to make it like this. So it's a complex substance made up of so many units and so many bonds are there between the unit. जब हम इसको digest करते हैं तो it is broken down into very simple substance which I can show by this circles. पहले वो ऐसे complex arrangement था, अब सारे bonds break हो गए, so you just have glucose. So digestion of carbohydrate will give you glucose. Now it undergoes respiration in cell. What is respiration? Again it's a combustion reaction. Glucose combines with oxygen and it releases energy for our life processes. Let us see the chemical reaction associated. Glucose is C6H12O6. Since we have taken a solution of glucose, I will write aqueous. It combines with 6 moles. 1 mole of glucose combines with 6 moles of oxygen to give you 6 moles of carbon dioxide plus 6 moles of water and a lot of energy. तो यहाँ पे energy evolve हुई, release हुई. So this is also a exothermic reaction. दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर. जब हम उसको डीकम्पोज करते हैं, द सराउंडिंग्स बिकम वार्म एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट. ये कैसा रिएक्शन है? फास्ट है या स्लो है? ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी वेरी स्लो रिएक्शन. आप एक काम करना, टेक बनाना पील एंड यू चॉप इट इनटू स्मॉल पीसेस. बनाना का छिलका, बनाना पील, एंड पुट इट इन अ पॉट. आपके घर में गार्डन होगा, बहुत सारे प्लांट्स होंगे, तो उसको किसी एक प्लांट में रख देना और उसको हर रोज़ ऑब्जर्व करना कि डीकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है. इट विल टेक आई थिंक अराउंड 15 days
and you do this, it will give a very good manure to your plant. Potassium is rich in banana, so that will be healthy for your plant. So decomposition is a very slow reaction, at the same time it is an exothermic reaction. तो हमने 4 एग्जाम्पल्स पढ़े एक्सोथर्मिक रिएक्शन के. कौन से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्मिंग स्लेकेड लाइम, रेस्पिरेशन, burning of coal, burning of natural gas, and decomposition of vegetable matter into compost. Endothermic के examples क्या हैं? Suppose if I take चना and I boil it, काले चने खाते होंगे आप लोग, बंगाल ग्राम. रात को उसको सोक करके रखना है वाटर में, soak it in water at night, and then what you have to do is pressure cook it. प्रेशर कुकर में डाल के वाटर एंड सॉल्ट डाल के 2 सीटी लगा दो. इट्स अ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट. तो ये जो रिएक्शन हुआ, यहाँ पे हीट यूज़ हुई ना. कैन यू बॉयल चना until and unless you use cooking gas? You cannot do it. So that is example of endothermic reaction. All cooking reactions are endothermic reaction because you are using energy in the form of cooking gas. One more endothermic reaction that we had discussed just in the beginning of the chapter was burning of magnesium ribbon. Do you remember? Magnesium ribbon को हमने burn करने के लिए flame use किया. So the flame was nothing but the energy that is required for the reaction to take place. If you just keep magnesium in air or in oxygen, will it react? No, it will not react. It requires heat for the reaction, and only then it will produce magnesium oxide, that is the product. So this is also endothermic reaction, plus it is also a combination reaction because see, 2 reactants, magnesium and oxygen, 2 reactants are giving one product, magnesium oxide. If you want to write a chemical equation for it, it will be Mg plus O2 gives MgO. So this is also endothermic type of reaction, but it is also a combination reaction. Now after this lecture, I want you to do a homework. The same thing, write name to formula, formula to name, write all the reactions and balance them, and also categorize them into whether they are exothermic or endothermic or combination. So let us quickly revise the name. CaO. CaO is calcium oxide. CaOH twice is calcium hydroxide. CO2 is carbon dioxide. CH4 is methane. C6H12O6 is glucose. And the endothermic reaction example, MgO. MgO is magnesium oxide. Okay, keep writing the chemical equations. Children, you should not forget the importance of writing. Until and unless you write the equations several times, the formulas several times, you will not be able to retain it or learn it. So as I always say, don't underestimate the power of a common man. No, it's not a common man because this is not Chennai Express. You don't underestimate the power of writing, comprehending and repeating. Write the reactions n number of times. हर रोज लिखो, हर रोज learn करो, हर रोज balance करो. Only then you will retain it after certain months for your board exam. So I'm signing off. Have a nice day.